वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MMPC-3 Business Environment. Attempt all the questions and submit this assignment to the coordinator of your study center. Question number 1. Describe the circular flow of income and expenditure. How is three-sector model different from four-sector model? Explain. So in this particular question, हमें circular flow of income और expenditure को explain करना है और साथ ही में three-sector model को four-sector model से differentiate करते हुए explain करना है. Let's discuss the answer. The circular flow of income or expenditure govern करता है size of the national income and overall worth को एक economy की जो understood करी जा सकती है within the interaction of two sectors, three sectors and four sectors. This is clearly represented by the diagram given below. Household supply factors of production to the firms जो factor payments make करते हैं to the households. Let's discuss three sector model. Three sector model include करता है government sector को in the circular flow, which is represented over in the diagram. इस मॉडल में गवर्नमेंट अफेक्ट करती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर को थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. लेट्स डिस्कस फोर सेक्टर मॉडल. फोर सेक्टर मॉडल इंक्लूड करता है द हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर को, और साथ ही में ये इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फंक्शन को. Export function. The main function of export is maintaining the foreign exchange reserves in an economy, और ये dependent है upon the factors जैसे कि prices of domestic goods in comparison to the prices of similar goods in importing countries and the trade policy and tariff policies in importing country. Import function. मेन फंक्शन ऑफ इंपोर्ट का होता है स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ अ कंट्री, और ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे जैसे कि प्राइजेस को इंपोर्ट करना इन रिलेशन टू डोमेस्टिक प्राइजेस, डोमेस्टिक टैरिफ्स, डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम्स, इनकम लेवल एंड एक्सपोर्ट लेवल को. Four sector model is represented with the diagram given here on the screen. Household, government, firm, foreign sector. Let's discuss question number 2. Examine the working of the capital market along with its various instruments and intermediaries. Let's discuss the answer. We have already studied that the money market वो market होती है जो provide करती है short term funds को investors के लिए for less than 1 year, but the capital markets वो market है जो funds provide करती है longer duration के लिए as business units और investors को funds required होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. एक कैपिटल मार्केट हेल्प करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करने में जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा हो. ये मार्केट सिग्निफिकेंस की होती हैं as they provide for channelizing savings, capital formation and industrial growth. The two types of capital markets हैं primary market and secondary market. प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है. इस मार्केट में इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज सेल करते हैं न्यू सिक्योरिटीज को. इस मार्केट में इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज सेल करता है नई सिक्योरिटीज को टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरीज. एंड सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है जो कि एक जगह है जहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा सोल्ड किए जाते हैं. अर्लियर आर सोल्ड एंड परचेज्ड. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं कैपिटल मार्केट में वो डिस्क्राइब्ड हैं एज फॉलोज, विच इंक्लूड्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. नीचे दिए गई इंटरमीडियरीज एक्सप्लेन करती हैं कैपिटल मार्केट्स को जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स वो इंटरमीडियरीज हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी, और ये एक्ट करते हैं एज एन एडवाइजर जो एडवाइस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट till the beginning of the production. Underwriters, in order to raise the funds, company decide करती है to go to public, so there is a need for someone who can subscribe to those securities. Next is portfolio managers or portfolio management services, which in short is abbreviated as PMS. Portfolio managers वो professional होते हैं जो enter करते हैं into a contract with the client to advise or direct or undertake investment decisions on behalf of the client.
दो टाइप्स के पोर्टफोलियो मैनेजर्स इंक्लूड करते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स। द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया इंक्लूड करते हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल पीएमएस, कोटक पीएमएस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएमएस एटसेट्रा। स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक ब्रोकर एक्ट करता है एक इंटरमीडियरी की तरह बिटवीन एन इंडिविजुअल और फर्म एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर traders on behalf of their clients are paid commissions or fees in return. Other jobs जो इनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं includes handling paperwork and maintaining records of all transactions and managing the portfolio of the client and provides advice to the investors on formulating different investment strategies. The objectives of SEBI include करता है safeguarding the interest of investors को, development and regulation of stock exchange को, preventing deceitful malpractices को और regulator develop करना एक code of conduct for intermediaries जैसे कि brokers, underwriters etc. के लिए। The various functions include करते हैं are the registration of stock exchanges, mutual funds, underwriters, brokers and sub-brokers. Let's discuss next question. How have the reforms in the insurance sector provided universal social security system, especially to the unprivileged? Discuss. Let's discuss the answer. There were three major schemes that were launched in order to provide a universal social security system, especially to the underprivileged and the poor population of the country, जो कि include करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इस स्कीम ने एम किया प्रोवाइड करना coverage of rupees 2 lakh for the accidental death and permanent total disability and rupees 1 lakh for partial disability for the account holders in the age group of 18 to 70 years. Premium of rupees 12 per annum is deducted from the bank and through the auto debit facility in one installment. Next is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PMJJBY। इस स्कीम के अंदर एक रिन्यूएबल 1 year term life cover होता है of rupees 2 lakh to all the subscribing bank account holders is offered to the subscribers in the age group of 18 to 50 years. ये स्कीम ऑफर की गई by Life Insurance Corporation LIC and all other life insurers. अटल पेंशन योजना APY ये स्कीम एम करती है at providing the pension especially to the people engaged in unorganized section जैसे कि gardeners, maids etc. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Let's discuss question number 4. How is theory of absolute advantage different from the theory of comparative advantage? Discuss. Absolute advantage और comparative advantage theory में जो differences हैं उनको discuss कीजिए। To know how international trade is now a globally necessity and how it benefits all trading partners include करता है country को which happens to be relatively inefficient, understanding the concept of absolute and comparative advantages of trade is needed. Absolute advantage की theory state करती है when a country can produce good with less unit of factor of production as compared to another country, the former is said to have an absolute advantage in the production of that good. And if we compare, the theory of comparative advantage involve करती है concept of opportunity cost को determine करने के लिए the gains from the trade. Country का comparative advantage रहता है in producing a good if opportunity cost of producing the good in terms of other good is lower than the country compared to other countries. अगर दो countries, let's say home and foreign, though producing two goods है, say cheese and wine, each country has only one factor of production, which is the labor. The unit labor needs to produce a unit of a good to produce cheese and wine in home country is given by LC and ALW, while the foreign is denoted by A multiplied by LC and A multiplied by LW. Does a country benefit for having absolute advantage in all goods? एक country में ability होती है सारे goods produce करने की, लेकिन वो benefit होता है from trading with other countries because of a comparative advantage. In the production of computers and production in South America will yield lower computers than it would have been in US. So the opportunity cost of 30,000 computers is 1 million roses. The differences in opportunity raise करता है possibility को of mutually beneficial trade agreements between the two countries.
Let's discuss question number 5. Write short notes. A part, corporate social responsibility. Let's discuss the answer. Corporate social responsibility रेफर करती है एक कॉन्सेप्ट को इन द मैनेजमेंट इन विच द कंपनी मर्ज करे सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को अपने बिजनेस ऑपरेशंस में और इंटरैक्शन उनके स्टेक होल्डर्स के साथ. India became the first country to make CSR spending and disclosure mandatory for large companies with specific turnovers with the enactment of Section 135 of the Companies. According to the Section 135 of the Companies Act 2013, ये important है एक organization के लिए to constitute a CSR committee of the board consisting of 3 or more directors जो कि एक independent director रहेंगे company के has an annual turnover of 1000 crore INR and more. Board shall specify the reason for not doing the same. Companies Act Amendment Act 2019, Section 135. The amount unspent shall be transferred to the scheduled bank and spent within 3 financial years. In case the company violate करती है किसी भी rule को, shall be punishable with a defined fine and defined officer shall also be liable for the prescribed punishment. CSR in consumer, CSR in community participation. यदि हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करें तो एडवांटेज ऑफ CSR इनिशिएट करता है एज सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए, लोकल और रीजनल डेवलपमेंट के लिए, अर्न करने में एक गुडविल और रैपोर्ट को जो कि हेल्प करती है इमेज बिल्डिंग और क्रिएट करने में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को, रेपुटेशन बिल्डिंग बाय पीरियोडिक अपडेट टू द गवर्नमेंट. Now let's discuss the disadvantages of CSR. Disadvantages are the cost incurred in the progress reduces the company of funds for deployment at other business verticals. ये लेसन करता है share of profit को to the stakeholders. Moving on to part B, banking structure in India. Let's discuss the answer. बैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया के. वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द बैंक, देयर फंक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंक की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो बैंकिंग रेफर करता है मीन्स ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. पब्लिक से लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए मनी डिपॉजिशन को ही बैंकिंग कहा जाता है. इसे किया जाता है with the promise of repayment on the demand by the depositor with the facility of withdrawal by check, draft, order or otherwise. These are the ways. Nowadays, many other functions are performed by the bank जैसे कि collection and payment of check, bills and promissory notes, sale and purchase of security, remittances of fund, merchant banking, service of automated teller machines which is ATM, electronic fund transfer and many more. बैंकिंग स्ट्रक्चर क्लासिफाई किया जाता है एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. इसको आगे क्लासिफाई किया जाता है इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. लेट्स डिस्कस पार्ट सी, आत्मनिर्भर भारत अभियान. After the COVID pandemic, the policymakers are rethinking the way economic system work. Policy aim करती है at promoting resilience, efficiency and equity. Main constituent of Atmanirbhar Bharat are the demand, demography, economy, infrastructure and system. Different sectors जैसे कि micro, small or medium enterprises, farmer, rural laborers or the empowerment are provided support by this particular scheme. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद 100 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.